Hi guys, in this series of videos, I'm going to talk about whether you should give the exam or not. Fine, my target is very simple. If I can save one exam का fees, यार average fees is around 2000 rupees per form. एक भी form का अगर बच गया rate हमारा फालतू exam which we're going to apply, we can avoid that. So this one the student, I think Yeshika have sent me this thing whether she was going to apply for the MAT exam, whether she should apply or not. So answer the question, I try to explain all the sides of the MAT exam in this video. So please do subscribe to the channel if you have not yet done, because for every exam and all the main college forms we are going to discuss like this. All the pros and cons we will talk about. In this video, we'll talk about the MAT exam, the complete information about the MAT, whether you should give or not give the MAT exam. So you can go to cetking.com/MAT, you can get the complete information in detail, because I'm going to cover up the overview in this video. So MAT is happening 4 years, 4 times a year. So you can give the exam 4 times. जब जाओ 4 बार दो, जो अच्छा score आए, we can apply via that score. So that's the number one advantage of the MAT exam. For example, November में आपका exam है, तो no problem, you can give in Feb or May or October. Yep, so that's the number one advantage of the MAT exam. MAT and ATMA, both the exams are same way, and both the exams are AICTE approved exam. So a lot of B schools are accepting MAT and ATMA scores. So these two exams will act as a very good backup plan. The paper pattern point of view, MAT, there are 4 sections: verbal, logic, DI and quant. GK, 5 sections are there, sorry. GK sections score is not calculated in your percentile. Yep. So GK का score you can ignore, you can don't need to touch any GK question, but GK score will get you the rank. Suppose a topper at 99.99, GK score will be counted. ठीक है, वो मैं explain करूँगा in a separate video. Once we get the main approval whether Jamnalal Bajaj is accepting scores or not. Yeah. So if you look at the verbal section, again you can go to cetking.com/MAT for the complete information. So relationships, direction sense, puzzle, series, linear arrangement, circle arrangement, same CET का pattern, पूरा CET का paper है. So those who are preparing for CET exam, you don't need to prepare separately for the MAT exam. We'll just give a couple of mocks and that will be taken care of. ठीक है, तो मैट एग्जाम अगर देना है तो वी जस्ट डोंट नीड टू सेपरेटली प्रिपेयर फॉर दैट. तो सीईटी का जो ब्लैक बुक्स है, ब्लैक बुक्स आर मोर देन सफिशिएंट फॉर द exam point of view. But yeah, those are preparing for the CAT exam. This is a totally different ball game. Non-CAT exam are totally different from the CAT exam. मतलब CAT का बुक्स यहाँ काम नहीं आएगा. Alright, so this is a score versus percentile for the MAT exam. So 99.99 is approximately around 160 attempt. So you can pause the video and you can check out here what score is equivalent to what percentile in the MAT paper. Okay, you can check out the thing. So now come the main question mark, which colleges are accepting MAT score. Yeah, so main thing here is Jamnalal Bajaj, Sidnam, all the Maharashtra based colleges for their main MMS program, are they accepting or not? This thing will come to know in May 2021. This is a fundamental issue on that. The DT will announce on May 2021 whether they are going to accept the scores or not. ठीक है, अभी till last year, every year JBIMS Sidnam used to accept ATMA and MAT score. हर साल लेता था. लास्ट ईयर बीच में आके इन्होंने बोल दिया कि हम नहीं लेंगे. ठीक है, तो इस बार लेंगे, दोबारा नहीं लेंगे. दैट ऑल डिपेंड अपॉन DT. दे विल अनाउंस इन मे, नॉट नाउ, दे विल अनाउंस इन मे और जून. तो हमें अभी क्या करना है, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वेट एंड वॉच. ना दिसंबर का मैट, अभी जो मैट आ रहा है, दिसंबर हो गया, अगस्त वाला मैट हो गया, वी डोंट हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दैट, टॉप करने के लिए. और JB सिडनम के लिए यू हैव टू बी अ टॉपर, मीन 99.9x चाहिए अगर आपको CET के टॉप कॉलेज में जाना है तो. सो 99.x तभी आ पाएगा व्हेन आई प्रिपेयर फॉर दैट. सो व्हाट विल डू, विल गिव द एटमा का एग्जाम इन फेब और मे. अगर JB ने एक्सेप्ट किया तो स्टार. JB एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे ख्याल से लेगा, बिकॉज इस बार AICTE का रूल आ गया कि JB हैव टू एक्सेप्ट द स्कोर. ऑल द कॉलेजेस have to accept, but we have to depend upon the DT. Yeah, DT जो बोलेगा is the main thing, because DT is the main governing authority which is accepting which is governing JB Sidnam all the colleges. Fine. So MAT लेगा कि नहीं लेगा is a big question mark. So backup के लिए हम एक MAT दे देंगे in Feb और May next year 2021 for the admission in 2021 as a backup plan. ठीक है, now come the second point. Lot of students who have given the CET exam this year got a very good percentile but are repeating.
फॉर एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर 99.80 आ गया, 99.60 आ गया, देन दिसंबर का मैट आई कैन गिव, बिकॉज आपके टॉप करने के चांसेस ज़्यादा है. कोई भी टॉप कर सकता है, नॉट डाउटिंग एनीबडीज कैलिबर हियर, बट बिकॉज तुमने लास्ट ईयर ऑलरेडी क्रैक किया हुआ एग्जाम, तो चांसेस ज़्यादा है. फाइन. तो अभी के लिए जेबी सिडनम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैट मत सोचो, ये वाला मैच छोड़ दो. हम फेब या मे में मैट देंगे अच्छे से. दिसंबर वाला इज अ बैकअप प्लान फॉर दोज हु हैव रिपीटेड. इन द मीनवाइल लेट्स चेक आउट द कॉलेज विच आर एक्सेप्टिंग मैट स्कोर. यू कैन गो टू cetking.com/mat फॉर द कंप्लीट लिस्ट. सो अलायंस, NILM, IFE, Jaipuria College, IPE, SIBM, all the colleges are accepting the scores here. Followed by SIS College, AIMS, Indus, नाम भी नहीं बता दोगे तो मेरे को, ITM, IES, SCMS, GBS, all these colleges are accepting the scores. So you can check out the more details on cetking.com/mat about the exam. So how you feel about the exam? Please do post in the comments. So according to me, none of the top B school are accepting the college the exam unless JB clarify that. तो बैकअप के लिए हम लोग फेब या मे में देखेंगे, अभी नहीं. तब तक के लिए I'll make more video when the exam come near. ठीक है, तब तक शायद DT पहले अनाउंस कर भी दे कि हाँ हम लेंगे या नहीं लेंगे स्कोर. सो जस्ट वेट एंड वॉच फॉर दैट. सो अभी का जो एग्जाम है दैट इज अवॉइडेबल, कंप्लीटली अवॉइडेबल. All right, all the best.